Where did it all start? We identified uh, some problem, yeah, opportunity for improvement. We identified stakeholders associated with this problem. We gathered their voice, converted to CTQ, and based on the CTQ, we created a charter. So here CTQ would be Critical to quality, जो metric पे आप project करना चाहते हो. Then we set out to identify, put together our business case, problem statement, put together our goal statement, put together our scope statement, identified our team, and allocated roles and responsibilities. For that, you used tools like RASIC or RMI or anything of that sort. You also did a detailed flowchart. You also created a SIPOC. You sent charter for approval. Then you jumped into the measure phase of Six Sigma. Measure phase also was only about our project Y. So you identified your CTQ matrix or your CTQ characteristic. Why can't people be on time? Identified the CTQ matrix or CTQ characteristic. We built our data collection plan. Based on the DCP, we collected data. We validated data using measurement system analysis. मतलब for continuous data, we did HR Naranova. For discrete data, we did AAA. We also assessed the as-is process capability. For numeric data, which had single-sided specification, we calculated the Z-score or Z-bench, like it is called. For double-sided spec, we calculated Z and CPCPK. For non-numeric data, we calculated DPMO. This is where your measure phase ended. But we have still been only talking about the project Y. We have not jumped into the factors. We have not started looking at what are the potential factors that impact your project Y. So the analyze phase of Six Sigma
Analyze phase will start with us identifying the potential contributors of our project Y. If you recall, we've been saying all this while that the entire thought of Six Sigma is about Y as a function of X. How do we solve problems? The only sustainable way of solving problems will be about identifying the root causes of the problems and fixing the root causes. So as part of that, the first step that we are taking now is about identifying our potential contributors. And for the same, we will deploy several methods. We will use brainstorming, we will use our SciPoc, we will use mathematical derivatives, we will use the existing data strata, etc. Once you've identified your potential contributors, optional hai, but we may want to showcase using a fishbone. Then we will build a data collection plan for factors, collect data for but whatever factors we've identified, these are only potential contributors. शायद शायद ये मेरे प्रोजेक्ट वाई को इम्पैक्ट करते हैं, शायद से जिंदगी नहीं चलेगी. So we will statistically validate which factors impact our project Y, for which we will do certain hypothesis. Everyone, you guys are with me so far? सर डीसीपी ऑफ फॉर फैक्टर्स का फुल डीसीपी क्या होगा यहाँ पे? TCP मेजर में क्या था? सर मुझे चेक करना पड़ेगा. डेटा कलेक्शन प्लान. ठीक है. तो यहाँ भी हम डेटा कलेक्शन प्लान बनाएंगे. Now let's get into details. पहला स्टेप हम ये कह रहे हैं कि we will set out to identify the potential factors. We will set out to identify the potential contributors, क्योंकि हमारा पूरा thought about Six Sigma is that Y is a function of X. हमको ये समझ में आता है that for sustainable solution design, identification and handling of root causes
is the only way. ये थॉट सबके दिमाग में एकदम केयरफुली इनग्रेव्ड है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशनिंग तो हम तभी कर पाएंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हम तभी कर पाएंगे सस्टेनेबली जब हम रूट कॉजेज ढूंढेंगे। और रूट कॉजेज के बिना कोई भी प्रॉब्लम परमानेंटली हैंडल नहीं हो पाएगी। एवरीवन, वी आर टुगेदर ऑन दिस थॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें Yes. कोई डाउट नहीं है, कोई Yes, sir. क्वेश्चन नहीं है। तो पहला काम जब हम एनालाइज फेज अपना शुरू करेंगे, पहला काम हम एनालाइज फेज में यही करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल फैक्टर्स। तो अगर आप ध्यान से सोचो, सिक्स सिग्मा इज नेसेसरली a problem solving methodology which is entirely focused on doing root causes, and it is called as, referred to as, process improvement methodology. तो अगर आप ध्यान से सोच के देखो, प्रोसेस का मतलब क्या? प्रोसेस का मतलब set of activities which consume inputs, uses resources, is supervised to produce an output. This is what a process is. तो अगर कभी भी मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि मेरा आउटपुट फ्लॉड आ रहा है, मेरे आउटपुट में प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम या तो जिस तरीके से सेट ऑफ एक्टिविटीज की गई हैं उनमें होगा, या जो इनपुट्स हमने इस्तेमाल किया है उन इनपुट्स में प्रॉब्लम होगा, जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं उन रिसोर्सेज में होगा, या इस सुपरविजन में इशू होगा। क्योंकि हम कह रहे हैं प्रोसेस के तो चार ही एलिमेंट है, सेट ऑफ एक्टिविटीज, इनपुट्स, रिसोर्सेज और सुपरविजन। यही चार चीजें जब होती हैं तो आउटपुट आता है। तो अगर मैं हल्दीराम हूं और मुझे दिख रहा है कि मेरी मिठाइयाँ ठीक नहीं बन रही है, if I am a manufacturing organization and I see that the product that I'm producing is not of good quality, it is simply saying either the way I am doing things, the set of activities, something is not right there, or the inputs that are being used right now, they may be flawed, incomplete, incorrect, poor quality, or the resources being utilized are not adequate, or the supervision is not in place as needed. People, we are on this thought, everyone. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो साहब जब आप Yes, sir. सोल्यूशनिंग करने आओ, प्रॉब्लम सोल्यूशनिंग करने आओ, तो बस यही कर लो ना, make a list of all the things that are done to be able to produce your product. Make a list of all inputs that are required in your product. Make a list of all resources that are being used. Make a look at the supervision that is being used. गड़बड़ इन्हीं चारों में से कहीं हो सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं हो सकता। तो इसी के लिए हम कह रहे हैं पहला तरीका हम इस्तेमाल करेंगे विल बी आवर ब्रेनस्टॉर्मिंग। वी विल रीच आउट टू दी ऑन द ग्राउंड टीम। ऑन द ग्राउंड टीम जो लोग एक्चुअल काम कर रहे हैं वो ज्यादा केयरफुली बता सकते हैं, ज्यादा डिटेल के साथ बता सकते हैं कि भसड़ कहाँ मची हुई है। We will reach out to the on the ground team and seek their help
on which of the above activities, inputs, resources, supervision, इनमें से कहाँ भसड़ मची हुई है? You guys with me, everyone? क्या गड़बड़ हो सकता है? हम ये कह रहे हैं कि सेट ऑफ एक्टिविटीज, या तो सेट ऑफ एक्टिविटीज जिस तरीके से हम चाय बना रहे हैं, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, वो एक्टिविटीज में गड़बड़ हो सकता है, इनपुट में गड़बड़ हो सकता है। तो हम भी जो ऑन द ग्राउंड टीम के पास जाएं, उनके पास अपना डिस्कशन प्राइमरली फोकस करें are the set of activities, right? Are the set of activities being followed? पहला तो क्वेश्चन यही है कि जो एसओपी बना है, जो सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं, वो सेट ऑफ एक्टिविटीज अगर गलत बनी हुई हैं तो बनी हुई सही है, फॉलो नहीं हो रही, तो इनपुट में क्या गड़बड़ हो सकता है? इनपुट मिसिंग हो सकता है, इनपुट पोअर क्वालिटी का हो सकता है, इनपुट इनएडिक्वेट हो सकता है, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड हो सकता है, एक्सेट्रा। वैसे ही आप रिसोर्स के बारे में सोचो, सुपरविजन के बारे में सोचो, बट this has to be done with the on the ground team. आपके सोचने का फ्रेम तो यही चार है: सेट ऑफ एक्टिविटीज, इनपुट्स, रिसोर्सेज और सुपरविजन। एवरीवन एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस थॉट? Yes, sir. Yes. 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 थोड़ा सा ये भी याद रखना पड़ेगा दैट रियलिस्टिक बात है दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग will have its own set of challenges. These challenges could be because people can be introverts and extroverts. It could be because of designation challenges. It could be because of designations. It could be because of individual choices. आपको पता है कि कुछ लोग कम बोलते हैं, कुछ लोग ज्यादा बोलते हैं। तो हमने जब एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करी, उसमें ये होगा कि समवन टॉकेटिव लाइक मी will do most of the talking and some others will not talk at all. Possible people? आपको इसका इंतजाम करना पड़ेगा that everyone participates, because that's the idea why we went to them. आपके अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग में अगर आपने केयरफुली प्लान नहीं किया टीम को, तो इट इज पॉसिबल दैट यू हैव वेरी सून सीनियर एंड देयर रिपोर्टीज इन द सेम ग्रुप। रिपोर्टी बहुत लाइकली है कि अपने लीडर के सामने बहुत कुछ न बोले, स्पेशली ऑन थिंग्स दैट ही वांट्स टू से। यहाँ लीडरशिप का इशू है, ही विल नेवर से दिस इन फ्रंट ऑफ अ लीडर। कहीं वो यस मिनिस्टर वाली टेंडेंसी है दैट व्हाटएवर बॉस इज सेइंग, बॉस इज राइट, बॉस को फॉलो करते हैं। कहीं आपके इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स और चॉइसेस। I've just come back from an audit. I went to Dehradun for 2-3 days. I had an audit on 9,000, 27,000 for a firm. एक जेंटलमैन जो उनका पूरा आईएसएमएस हेड करते हैं,
मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके रिलेशनशिप्स में कुछ इश्यू आया है। ही वाज सो नॉट रेडी टू पार्टिसिपेट दैट उस कंपनी का सर्टिफिकेशन कैंसिल हो गया। मैं एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर, मैं तो बस ऑडिट करूंगा। मुझे जो आप एविडेंस देंगे मैं उस एविडेंस को मानूंगा। अगर आप एविडेंस नहीं दोगे, मुझे एविडेंस नहीं मिलेगा, तो आपका सर्टिफिकेशन गया। एंड दिस इज नथिंग बट वो आपके इंडिविजुअल केमिस्ट्री का आउटकम। ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी ये चैलेंजेस आएंगे। इन माय प्रीवियस जॉब there was a situation that the head of HR and the head of operations were not in good terms. So whatever ideas were shared by the HR team, उसको operations वाले reject कर देते थे because of individual preferences. You guys with me? Yes. Yes, sir. People, Right, sir. बिल्कुल सही. बिल्कुल। मैं फॉर्मल एनवायरनमेंट में बहुत लोग ओपन अप नहीं होते हैं। इनफॉर्मली आप उनसे बात कर लो, वो आपको आंसर्स दे देंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि वेदर फॉर्मल सेटिंग्स विल वर्क फॉर some फॉर्मल सेटिंग्स वोंट। और हमारा तो परेशानी एक बहुत सिंपल है कि हमको अगर रूट कॉजेज नहीं पता चलेंगे तो हम कुछ भी कर लें, सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो हमको फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने ही करना। तो एक तरीका ब्रेनस्टॉर्म। दूसरा तरीका, जो साइपॉक हमने बनाया था, जो फ्लो चार्ट हमारे पास था, उससे हम इनपुट्स और रिसोर्सेज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड लाइक आई एम सेइंग, भसड़ तो चार ही चीजों में हो सकती है: सेट ऑफ एक्टिविटीज में, इनपुट्स में, रिसोर्सेज में और सुपरविजन। तो हो सकता है साइपॉक को अगर हम डिटेल से पढ़ें तो हमको इनपुट रिसोर्सेज आइडेंटिफाई हो जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज वी विल नॉट नीड एसएमई पार्टिसिपेशन टू हेल्प अस विद आंसर्स हियर। हमको किसी की डिपेंडेंसी नहीं है। अनदर वे कुड बी मैथमेटिकल डेरिवेटिव्स। इफ आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑन, लेट्स से, हैंडलिंग टाइम, अगर आप ध्यान से देखो किसी कॉल को, तो हैंडलिंग टाइम इज नथिंग बट अ सम ऑफ कॉल का ओपनिंग टाइम प्लस प्रोबिंग टाइम plus issue resolution time plus summarization time. Maybe some hold time was also involved, and maybe some after call work was also involved. When I add all of them up, it finally becomes my handling time. People together with me on this? Yes. तो ये तो by default, ये सारे by default मेरे factors हैं. If I am looking at doing a project on recruitment cut at, हम क्या कह रहे हैं? रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को ध्यान से पढ़ो. So there was an opening that was created. Let's call it MPR, manpower requisition. तो उसका अप्रूवल चाहिए. तो MPR का अप्रूवल, एक बार MPR अप्रूव होके आ गया तो हमने रिज्यूमे सोर्सिंग शुरू करी. रिज्यूमे सोर्स करके हमने हायरिंग मैनेजर को भेजा, उसकी शॉर्टलिस्टिंग, फिर इंटरव्यू शेड्यूलिंग, फिर
एक्चुअल इंटरव्यूज का टैट, फाइनलाइजेशन का टैट, उसमें मैंने HR राउंड का टैट ऐड कर दिया, ऑफर भेजने का टाइम, फिर ऑफर एक्सेप्टेंस पे टाइम लगेगा. When I add all of this is equal to my recruitment time. Anything that I missed, guys, here? If I add all of them up, this becomes my recruitment time. तो अगर मैं इनमें से किसी को improve करूंगा तो recruitment time अपने आप improve हो जाएगा. People with me on this? Yes. Yes, sir. तो mathematical derivatives भी अच्छे खासे successful होते हैं when you are identifying your potential contributors. डेटा कभी भी साइलो में एग्जिस्ट नहीं करता है. जहां कहीं से भी आप डेटा उठाएंगे वहां डेटा अपने साथ कुछ सबग्रुप्स, डेटा विल ऑलवेज हैव सम प्री डिफाइंड सबग्रुप्स. अगर आप ध्यान से देखो तो दीज सबग्रुप्स could be your potential contributors. नो पीपल, समझ में आया ये थॉट कि नहीं समझ में आया ये थॉट? नो नहीं सर, ये वाला नहीं क्लियर हुआ अभी. सर 4 पॉइंट क्लियर नहीं हुआ. अगर ये डेटा, मैं कोई भी एक डेटा एक दो सेट आपके लिए बोलता हूँ. दिस डेटा has been captured by a manufacturing organization. अगर आप ध्यान से देखो इसकी हेडिंग्स, दिस इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रोकर. कितना बिस्किट टूटा है, दिस इज आवर प्रोजेक्ट वाई. लेकिन उन्होंने उसी डेटा में 5 मशीन्स का 6 मशीन्स का नाम भी दिया है कि सम टोटल ऑफ दीज मशीन्स इज एक्चुअल इक्वल टू द टोटल ब्रेकेज. they've also given you date of the broker, they've also given you प्रोडक्शन का डेटा. कहीं ऐसा तो नहीं कि आर दे इज दिस डेटा नॉट इटसेल्फ टेलिंग यू कि शायद प्रोडक्शन में और टोटल में कोई लेना देना है? पॉसिबल पीपल? यस सर. वो कह रहे हैं शायद डेट इज अ पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर. ध्यान से देख के देखो, ये सब ग्रुप तो आपको डेटा के अंदर ही मिला था, ये तो आपने नहीं बनाया था. करेक्ट ना? यस सर. Let's look at another data set. This is data from an insurance firm on the duration of a call. जो उनके बीपीओ से हमको मिला, ये सब हमने बाद में निकाला था, इसको 2 मिनट के लिए भूल जाते. ये सारा हेडिंग पहले ही उन्होंने आपको दिया था. केस टाइप क्या था, क्वेरी टाइप क्या था, उस क्वेरी का सब क्वेरी क्या था. तो कहीं ऐसा तो नहीं कि केस टाइप इज अ पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर. आपको ढूंढना तो नहीं पड़ा ये तो एग्जिस्टिंग डेटा में था आपके पास. पीपल
Yes, sir. यस नो? यस सर। हो सकता है शायद क्वेरी का इम्पैक्ट हो आपके टैग पे, कहीं सब क्वेरी का इम्पैक्ट हो, कहीं स्टेटस का इम्पैक्ट हो। तो जो आपके पास एग्जिस्टिंग सब ग्रुप्स हैं अवेलेबल इन योर डेटा, एक बार चेक करके देख लो, शायद दे आर दी पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर्स। दैट इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रैटा। क्लियर है थॉट ये? Yes, sir. बहुत लोग क्या करते हैं, एफएमए बनाते हैं। I don't know how many of you know the tool called failure mode in effect analysis. यहाँ आप potential failure modes ढूंढते हो। Here you are required to identify potential failure modes, और इस failure mode का हम root cause भी identify करते हैं। ये root cause could also be one of the impacting factors. Let me quote you an example. हमारा अपना जो sales process है, that sales process is pretty straightforward, you know. We do a lot of online presence management. My screen is visible to all of you. यस सर। Yes. तो हम बहुत कुछ करते हैं ऑन दी फ्रंट ऑफ गूगल पे, एसईओ, एसएमओ, तो जिसको मैं ऑनलाइन प्रेजेंस मैनेजमेंट बोल रहा हूँ। इससे लीड जनरेट होती है, लीड एलोकेट होती है टू पीपल। जो लीड हैंडल कर रहा है वो सॉफ्टवेयर में डालता है, ऑल ऑफ दैट। हर स्टेप का जब हम फेलियर ढूंढते हैं, यहाँ एक स्टेप है कि नेहा लोगों को लीड असाइन करती है। व्हाट इज दैट असाइनमेंट इज रॉन्ग, व्हाट इज दैट असाइनमेंट इज डिलेड। तो अगर हम यहाँ पे फेलियर मोड देख रहे हैं, देयर कुड बी डिले इन allocation of claims, allocation of leads by Neha. They could be wrongful allocation also. और उसका रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है दैट देयर इज नो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑन हैंडलिंग। ये शायद एक नॉन वैल्यू एडिंग स्टेप है, इसका लॉजिक ऑटोमेट कर देना चाहिए था शायद हमको। तो मेरा एक रूट कॉज ऑफ lack of SOP of lead allocation could also become one of my potential contributors. बात समझ में आई, बात नहीं समझ में आई? सर आगे से सर एक बार और बता दीजिए। समझाया। तो वी सेट हमारे अलग अलग हमारे पहला हमारा एक स्टेप है, now we do lot of online presence management. एक्चुअली ये SEO, SMO, PPC ऐसी चीजें होती है। तो हमने इसका फेलियर मोड ढूंढा। What can go wrong here? Wrong keywords used. Another failure mode could be inconsistent. अब जब हमको ये दो फेलियर मोड दिख रहे हैं, अगर मैं इसका रूट कॉज ढूंढूं, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस? इसका रूट कॉज ये है कि हमारा वेंडर इज नॉट अ SME ऑन कंसल्टिंग। उसको समझ में नहीं आता, कुछ भी करता है वो। सो लैक ऑफ स्किल ऑन द वेंडर्स पार्ट इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर अस। ये आपके प्रोजेक्ट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। इफ यू लुक एट माय प्रोजेक्ट, मेरे प्रोजेक्ट में जो फिशबोन है, उसमें
ये सारी चीजें मेंशन करी है मैंने, और बहुत सारा सिंपली FMEA से निकल के आया है। यू गाइस विथ मी? यस, समझ में आया कि ये बाउंसर हो गया? जी सर। सही से समझ आया। तो पहला तरीका मैं कह रहा था ब्रेनस्टॉर्मिंग, दूसरा तरीका मैं कह रहा था इनपुट्स और रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करना, जिसके लिए आप टाइप ऑफ फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हो। एक तरीका मैंने कहा मैथमेटिकल डेरिवेटिव, एक तरीका मैंने कहा एक्सप्लोरिंग द एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्राटा, एक तरीका मैंने कहा FMEA। इन तरीकों से आपने अपने फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन फैक्टर्स को लिखने की बजाय आपने फिशबोन में उनको शोकेस किया कि मैंने कहा कि मेरा सेल्स रेवेन्यू डाउन है। सेल्स रेवेन्यू डाउन होने का कारण क्या है? लेस नंबर ऑफ लीड्स, या लीड की क्वालिटी खराब है, या लीड हैंडल करने में डिले हो रहा है, लीड एलोकेट करने में डिले हो रहा है। व्हाट आर द पीपल इश्यूज दैट आर इम्पैक्टिंग सेल्स रेवेन्यू? बहुत मोनोटनी हो गई है, 10 साल हो गए नवीन को वही काम करते करते। वी हैव बीन मार्ड विथ लॉट ऑफ फैमिली इश्यूज, लोग बीमार हैं, घर वाले बीमार हैं, all of that has also been a contributor. I feel that my participation has not been right. I could have contributed big time, but I have not been someone who's participated, and that I think is an important contributor. Uh, एक हमको प्रॉब्लम ये दिखता है कि हम ना सिर्फ लिंक सिस्टम बेचने में इंटरेस्टेड है, एक्सेट्रा। तो आपने फिशबोन अपना बनाया, और फिशबोन अपना रूट कॉज आइडेंटिफाई किया, और रूट कॉजेस को आपने फिशबोन के थ्रू दिखा दिया। सो दैट वाज माय स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन, दूसरा ऑप्शनल स्टेप जो मैं कह रहा हूँ, आप इसको फिशबोन के रूप में दिखा दो। क्लियर थॉट एवरीवन? यस सर। अब now that you've identified your potential factors, step number 2 is to create a data collection plan. हम शुरू से एक बात पे बहुत जोर डाल रहे हैं, that you know at the end of the day your entire journey is about getting into measurable metric. तो हमने अपने फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए। सो लेट्स से वी हैव आइडेंटिफाइड आवर पोटेंशियल फैक्टर्स। उन पोटेंशियल फैक्टर्स का क्या मेजरेबल मेट्रिक होगा वो आइडेंटिफाई करना है, उसका डेटा टाइप आइडेंटिफाई करना है, कौन सा टेस्ट करेंगे, कौन सा डेटा विजुअलाइजेशन टूल, और एक रिमार्क। मैं ऐसे एक बॉक्स बना देता हूँ। तो स्टेप पहला बॉक्स में मैं लिख रहा हूँ पोटेंशियल फैक्टर। वन ऑफ द पोटेंशियल फैक्टर्स वाज delay in lead allocation. कैसे मेजर करोगे डिले? We are saying time from lead received to lead allocated. थॉट क्लियर है आप लोगों को? मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? यस, इट्स क्लियर। ये जो इंग्लिश यस में सर, लिखा है आप यू आर वर्किंग ऑन राइट सर। ठीक। डिलेइंग मैंने लीड कहा एलोकेशन। आई सेड दैट यू नो स्किल इशू है। लीड हमारे पास इसलिए नहीं आ रही है, सेल्स हमारा इसलिए इम्पैक्ट हो रहा है, स्किल इशू इन रिगार्ड्स टू हमारे लिए। हमको ऐसा लगता है कि हमको बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू हैंडल गूगल एड्स, एसईओ, एसएमओ, इसीलिए
सेल्स इम्पैक्ट हो रही है, लेकिन इसको मेजर कैसे करें? हाउ डू वी मेजर दिस पीपल? एनी सजेशंस? knowledge check scores, any test. मे बी वैसे ही कुछ कर लें, पीकेटी बना लें कुछ। आप लोगों को बात समझ में आई? Yes, sir. Others, are you with me? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये टाइम है, टाइम फ्रॉम लीड रिसीव टू लीड एलोकेटेड। कौन सा डेटा टाइप होगा, कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट? Continuous. प्रोसेस नॉलेज टेस्ट का स्कोर कैसा डेटा, कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट? Discrete. आगे हम पढ़ेंगे और डिसाइड करेंगे व्हाट इज द हाइपोथेसिस टेस्ट टू बी यूज्ड, व्हाट इज द ग्राफ और डेटा विजुअलाइजेशन टूल बी यूज्ड। वी विल डिसाइड ऑन स्टेप्स। यही है डेटा कलेक्शन प्लान फॉर योर पोटेंशियल फैक्टर्स। सिंपल थॉट एवरीवन। Sir, two questions. जो हम बात कर रहे हैं डेटा कलेक्शन प्लान और फिशबोन, तो फिशबोन हमारा मेजर और एनालाइज दोनों में यूज होगा या सिर्फ एनालाइज में यूज होगा? सिर्फ एनालाइज में यूज होगा, अनलेस Okay. आप एमएसए का फिशबोन बना रहे हैं। एमएसए आपका अच्छा। फेल कर गया है और आप एमएसए को सुधारना चाहते हो, तो आपने एमएसए का फिशबोन बनाया है मेजर में। अदर देन दैट देयर इज नो रीजन ऑफ यूजिंग अ फिशबोन इन द मेजर वे। ओके, और डेटा कलेक्शन प्लान मेरे पोटेंशियल इनपुट फैक्टर्स के लिए ही यूज होगा ना? एक मैंने मेजर में बनाया था मेरे वाई के लिए, हाँ। यहाँ मैं बना रहा हूँ हाँ, अपने एक्सेस के लिए। ओके, ठीक है, ठीक है। Once I've made my data collection plan, obviously next step will be to collect the data. ध्यान रखना है कि ये अभी भी पोटेंशियल फैक्टर है, तो पोटेंशियल से तो जिंदगी ना चलने की। आई वुड वांट टू वैलिडेट कि एक्चुअली इन सारे पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर्स में से कौन सा फैक्टर मेरे प्रोजेक्ट वाई को इम्पैक्ट कर रहा है। सो आई विल वांट टू स्टैटिस्टिकल validate which factors impact my project well. This is done through a method referred to as hypothesis testing. Sir, hypothesis testing मतलब? टॉपिक का नाम लिखा है तो मतलब तो आगे बताऊंगा ही, समझे थोड़े? अच्छा सर, आपने ऊपर वो ब्लू लाइन में लिखा था ना, तो इसलिए ठीक। तो वी आर नाउ, अभी तक जो भी मेरे पास फैक्टर्स थे वो सारे फैक्टर्स पोटेंशियल थे, शायद मेरे प्रोजेक्ट वाई को इम्पैक्ट करते हैं, शायद से मैं नेक्स्ट स्टेप्स नहीं डिसाइड कर सकता। सो आई वुड वांट टू वैलिडेट, फॉर दैट वी यूज अ स्टैटिस्टिकल मेथड रेफर्ड टू एज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। Like the term itself is saying, hypothesis matlab assumption, testing. So we will create certain assumptions and then we will test those assumptions कि भैया दोनों assumptions में से कौन सा assumption right है, कौन सा assumption wrong है। Hypothesis हमेशा binary होता है, one which is referred to as null hypothesis, another which is referred to as alternate hypothesis. Null will always say that, यहाँ तक हम साथ साथ हैं। Hypothesis is always binary,
one which is referred to as null, referred to as HO. So Alternate, binary means two input, right? दो It ऑप्शन, can इनपुट नहीं, दो दो ऑप्शन, अच्छा दो ऑप्शन, ठीक. एक नल, दूसरा ऑल्टरनेट. हमेशा याद रखिएगा कि डेटा का 3 कैरेक्टरिस्टिक है. One which is referred to as normal. Unless something from the outside interferes or intervenes, data is always normally distributed. जब तक कोई बाहर से इंटरवीन न करे. For example, let's say we have captured the temperature of Delhi for past 30, 40, 50 days. Unless something from the outside impacts, टेम्परेचर जो होगा दिल्ली का वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. नॉर्मल का डेफिनेशन याद है एवरीवन? what is the meaning of the term normal? We were saying in our basic statistics that normal का मतलब adherence to and p values. adherence to the 3 rules. मतलब कौन कौन से रूल थे? मीन प्लस मीन मीडियन माइनस, मोड. ना मीन प्लस माइनस अच्छा 1 standard deviation shall always have 68% of the data. Rule 2, mean plus minus 2 standard deviation will always have कितना percent? 95.44. Great. Mean plus minus 2 standard deviation shall always have 95.44% of the data. थर्ड का कितना परसेंटेज होता है? 99.74. Fantastic. Who's this? Nabila. Fantastic. Good. तो ये तीनों रूल को डेटा जब अडियर करता है उस डेटा को हम नॉर्मल डेटा कहते हैं. डेटा बाय डिफॉल्ट हमेशा नॉर्मल होता है. इसका मतलब null hypothesis. Whenever you are checking for normality, HO will always say that data is normal. Alternate के पास अपना दिमाग नहीं है. जो null बोलेगा उसका उल्टा बोलेगा. null ने बोला normal तो alternate हमेशा बोलेगा non normal. People, you with me so far? Yes, sir. Repeat this, Pranay. Yes, sir. आपने कुछ पूछा. Can you say that again, please? I request you to repeat this statement difference here. We said normality. Whenever you are looking at normality, the null hypothesis will always say that data is normally distributed, while alternate will always say the opposite of what null said. Null ने बोला normal, इसलिए ये बोलेगा non normal. Fair everyone so far? Yeah.
Yes, sir. Another characteristic of the data is referred to as randomness. Data by default shall always be random. Random का मतलब, random is absence of patterns in data. हम ये कहते हैं data may exhibit 4 patterns. One, which is referred to as trend. मतलब if data is moving in one direction, उस पैटर्न को हम ट्रेंड कहते हैं. Everyone together with me? Yes, sir. हमने 25 डेटा पॉइंट कैप्चर करा है. In the last 8 days, we see that data is moving upwards or downwards. उस पैटर्न को हम ट्रेंड कहते हैं. Another pattern is referred to as oscillation. Data moving up and down. तो assume करिए एक situation that I have my first data point at 10, next data point is at, let's say, 80, then it comes back again at 12, then it goes back to again 78. Third data point is, next data point is again around a 10, and next is again it go back to 80. If I were to draw a line, if I were to draw a graph of this, you will pretty much see up and down motion. This is referred to as oscillation. Simple, everyone? Yes, sir. ट्रेंड हो गया. You can see that the data is constantly moving upwards. This is what is referred to as trend. Oh, वो भी चेंज हो गया. तो सोर्स पकड़ रहा है वो डेटा का. Are we together, everyone? Yes, sir. क्रॉस Yes, करके yes. लगा दीजिए सर. Question, हाँ. Pranay. What if it would have been a curve like being created with the points that we have in the data? Would that be also considered as an oscillation? Oscillation का मतलब moving up and down. तो पहला डेटा नीचे होना चाहिए या ऊपर होना चाहिए, अगला नीचे, उसके बाद ऊपर नीचे मतलब constantly consecutive data point must move to and fro. So वैसा है. sinusoidal, kind of sinusoidal movement. बिल्कुल. Okay. Then you have another which is referred to as mixture. सर ये ऑस्किलेशन के अंदर डू वी कंसिडर एनी नंबर ऑफ डेटा पॉइंट एज वेल कि इतने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट मेरे ऊपर नीचे होंगे तो ये ऑस्किलेशन है डेटा में, या 2-3 डेटा पॉइंट ही हैं ऊपर नीचे तो भी चलेगा? देखिए, जब आप इसको इसमें आपको कंट्रोल चार्ट कुछ एडवाइस देता है
when you are building control charts goes to the extent of advising you number of runs that could be referred to as oscillation. ये दिख रहा है आपको k points in a row, all increasing, all decreasing. Everyone, can you see this? ये 6 Yes, है, sir. यही है ट्रेंड. 14 है ऑसिलेशन. तो किसी भी डेटा में अगर 14 पॉइंट्स लगातार अप एंड डाउन करेंगे तो ही ऑसिलेशन बोलेगा कंट्रोल चार्ट. 6 पॉइंट उसको लगातार ऊपर या नीचे जाते हुए मिलेंगे तो उसको वो ट्रेंड बोलेगा. Fair thought? Yeah. Yes, sir. I will come back to this. Mixture is referred to as absence of data near the central line. तो अगर हम एक मीन ड्रॉ कर लें and if we don't have data near the central line, अगर मैं इसका मीन निकालूं, the mean will be somewhere around a 56. तो लाइन 56 पर अगर मैं खींच दूं तो you will see that data is either on the lower side of 56 or on the higher side of 56. It is not near 56 at all. Correct, everyone? If you see such pattern in your data, that is referred to as mixture. Then you have another one referred to as cluster, which is data close to each other. ये जब चारों पैटर्न नहीं होते हैं डेटा में, तब हम उस डेटा को रैंडम डेटा बोलते हैं. Data by default shall always be random. Null हमेशा कहेगा alternate हमेशा उल्टा बोलेगा. जो null बोल रहा था उसका उल्टा बोलेगा, इसलिए वो कहेगा डेटा इज नॉन रैंडम. Questions, people? Anyone? Any questions? Or are we good? Should we proceed further? Sir, it's Third view. clear. Okay. The third factor, the third characteristic is independence. Independence का मतलब nothing impacts nothing. दिल्ली के टेम्परेचर को शिमला की बारिश से, शिमला की बर्फ से कोई लेना देना नहीं. Your y is independent variable is what independence is all about. नल हमेशा बोलेगा y is independent, that is x does not impact y. Alternate hypothesis हमेशा इसका उल्टा बोलेगा. तो अगर ये कह रहा है कि वो इंडिपेंडेंट है तो ऑल्टरनेट कहेगा मेरा y डिपेंडेंट है. पढ़ो आगे. Yes, sir. जी sir. So whenever we are trying to find if x impacts y
or not? Null will always say that X does not impact Y. Alternate will say X impacts Y significantly. यही है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इन दी हाइपोथेसिस टेस्टिंग थॉट. बढ़े आगे. We were saying that hypothesis binary character का है, या तो null होगा या alternate होगा, and the decision criteria is something that is referred to as p-value. P-value is the decision criteria अब ये दो हाइपोथेसिस था हमारा, मतलब दो assumption था. हमने ये कहा दो में से एक ही assumption राइट होगा, तो दोनों में से कौन सा assumption हम एक्सेप्ट करेंगे will be determined by a value referred to as p. P value also referred to as value of significance is a probability value मतलब can never be smaller than 0, can never be and it always explains the contribution of chance. It always explains the contribution of chance in a relationship. Statistics में, let's say, I'm trying to find out if I'm very superstitious in life. I'm trying to find out if cats impact or cause accidents or not. That's my hypothesis. There are only two possibilities. Either they do impact, null bolega, no, X does not impact, which means cats don't impact. Alternate बोलेगा ध्यान रखिएगा स्टैटिस्टिक्स में हमारा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट हियर इज कैट. Accident could have been caused by things other than the cat. No, maybe I was driving drunk, ब्रेक फेल हो गया, कुछ और हो गया, so they could also be the contributor to our problem. Factors other than your subject of interest in statistics is referred to as chance. Yes, no, black, white, समझ में आया, फ्रेंच हो गया. Yes, sir. Understood. इसका मतलब p वैल्यू हमेशा अदर फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन बताता है. So let's say in the बिल्ली वाला example we received a p value of 0.23. तो ये कह रहा है the other contributors का कंट्रीब्यूशन 23% है. इसका मतलब कैट का कंट्रीब्यूशन कितना है? 77%.
थॉट क्लियर है आप लोगों को? Let's say Yes, sir. we are trying to explore if salary causes attrition. हमने इसके लिए टेस्ट किया और उसका पी वैल्यू निकल के आया 0.1. इसका मतलब क्या हुआ? फैक्टर्स अदर देन सैलरी का कंट्रीब्यूशन, फैक्टर्स 10%. अदर देन सैलरी का कंट्रीब्यूशन इज 10%. मतलब सैलरी का कंट्रीब्यूशन कितना? 90% sir. 90%. बराबर. For the next 10 minutes, जब कब we will assume that whenever p value नहीं, whenever factor का contribution is greater than 95%, we will consider factor as significant. I'm doing a project on attrition. So I looked for salary. Salary का p value आया, let's say 0.12. इसमें फैक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 0.88. 0.88. 88%. हमने अभी अपना एक बेंचमार्क रखा है 99, 95. ये 95 से छोटा है. So we are concluding that HO is true. No, no. Fair everyone? ये HO true कैसे आया? हमने कहा Yes, था sir. 95 से ऊपर होगा तो ही हम HA बोलेंगे. यहाँ 95 से कम आया है, इसलिए हम ये कह रहे हैं null is true, जिसका inference है that salary does not impact attrition. यहाँ तक हम साथ साथ हैं everyone? Yes, sir. सुपरवाइजर बिहेवियर अज्यूम करिए पी वैल्यू आया 0% और 0. फैक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 100%. इसका मतलब ये HA हो गया. HA. इसका मतलब हम ये कह रहे हैं सुपरवाइजर बिहेवियर इम्पैक्ट एट्रिशन. इसको देखने का दूसरा तरीका या अभी और भी कर लेते हैं. और बताओ पोटेंशियल रीजंस व्हाई एट्रिशन हैपन. Market competency, like other companies are offering good. Shift issues, sir. Health issues. Health issues. Work environment sir. मार्केट कंडीशन, वर्क एनवायरनमेंट. Tenure. Shift So, issues. शिफ्ट इश्यूज. Issue also. Shift timing. शिफ्ट टाइमिंग कर देता हूँ. इसका आया लेट्स से 0.3, इसका आया 0.02 या 0.1, इसका आया 0.1.12. ये 0.3 है तो फैक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना? 70% sir. 70% sir. वर्क एनवायरनमेंट का आया 0.01 तो 90%. 99. 99, sir. शिफ्ट का है, शिफ्ट का फैक्टर कंट्रीब्यूशन कितना? Sir, minus 98.98. नहीं, पी वैल्यू कभी भी 98.0. पी वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है. सो ये रॉन्ग है. Wrong. आप बताओ शिफ्ट टाइमिंग 0.12 का मतलब बताओ. 88%. 88. एक काम करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, 0.02 कर देता हूँ. तो
तो ये अब 98% हो गया, और हमारे पैरामीटर में 95 से ऊपर हैं दोनों, तो हम ये बोल रहे हैं alternate is true, HA. alternate is true. HA. 70% वाला हो ठीक है। HO is true. यस सर इसको सोचने का एक और तरीका ये है कि जब कभी भी p वैल्यू इज लेस देन 0.05 तो हमेशा HA ट्रू होता है। We were helping our organization a little while ago on reducing their attrition. बहुत सारे factors हमने explore करा, and once we had our factors identified, we went ahead and did hypothesis testing. Can you see my screen well? यस सर Yes, sir. P value 0.000. क्या बोलूं, null या alternate? सर ऑल्टरनेट। Alternate. कंपेयर करना है Alternate, sir. 0.05 से। अगर 0.05 से छोटा आ रहा है तो ऑल्टरनेट बताओ। सिंपल थॉट एवरीवन। यस सर इसका मतलब हम ये कह रहे हैं टेन्योर अट्रिशन को इम्पैक्ट करता है। दूसरा जेंडर, पी वैल्यू 0.63, नल या ऑल्टरनेट? नन सर नल हो जाएगा। नल। अगला पी वैल्यू 0.00, अल्टरनेट Alternate. ऑल्टरनेट सर। मैरिटल स्टेटस पी वैल्यू ऑल्टरनेट सर। अल्टरनेट सोर्स ऑफ हायरिंग का पी वैल्यू। ऑल्टरनेट। तो आप पी वैल्यू देख के डिसाइड कर सकते हो कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है। क्लियर है यहाँ तक थॉट एवरीवन? यस सर। यस सर, ये पी वैल्यू से ग्राफिकल समरी में आपने डिफाइन में जो बताया था, जो बेसिक स्टैक में, वहीं से निकलेगा ना? थोड़ी देर बाद इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा, बस वेट फॉर अ लिटिल व्हाइल। यहाँ तक एवरीवन वी आर टुगेदर? यस सर। Yes, sir. तो मैं ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को भेज रहा हूँ। प्लीज स्पेंड 10 minutes reading through this document. Ask me questions if you have some. If you don't, take a 15 minutes break, and then on the other side of the break we will jump into the next portions of hypothesis test. ठीक है? ठीक है सर Sure, sir. Questions on what we've done so far, because we will now jump into the analyze hypothesis test. So you got to be. Hello, Yeah. sir. While identifying the potential contributors, there is a point in which is mathematical derivatives. So I need examples. नोट्स में जो एग्जांपल है वो पढ़ के बता पहले मुझे। No, for mathematical derivatives. हाँ, वहाँ नोट्स में जो एग्जांपल मैंने दिए हैं वो पढ़ के बताओ एक बार मुझे। Then I will build on it. नोट्स जो मैंने शेयर किया वो पढ़ा तूने? Mention that what is the formula? नहीं नोट्स में जो अभी जो क्लास नोट्स मैंने शेयर किया। Yes, sir. अभी ये देख। Yes. Reflecting the formula which we use to identify तो our ये देखो, look at this example here.
if I'm doing a project on handling time, I see that handling time can be broken into small intervals. There is some time that is being spent in call opening, then probing, then issue resolution, then summarization, hold time plus after call work. When I add all of them up, it becomes my handling time. So iska matlab, all these factors are my potential factors. दूसरा Okay, example, fact can be derived from these sections. खास करके जब कभी भी टैट का प्रोजेक्ट हो ना, तो टैट के प्रोजेक्ट में ये बड़ा सिंपल होता है. अब रिक्रूटमेंट को मुझे इंप्रूव करना है, तो मुझे मालूम है मैन पावर रिक्विजिशन फॉर्म का अप्रूवल में टाइम लगेगा. मुझे मालूम है रिज्यूमे सोर्सिंग में टाइम लग रहा है. मुझे मालूम है दैट हायरिंग मैनेजर को इंटरव्यू रिज्यूमे भेजेंगे, वो शॉर्टलिस्ट करके भेजेगा, उसमें टाइम लगता है. सो ऑल ऑफ दैट बिकम्स माय पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर. इसी को हम मैथमेटिकल डेरिवेटिव कह रहे हैं. मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था एक कस्टमर के साथ ऑन मार्जिन इंप्रूवमेंट. मार्जिन का मतलब ही है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. Yes. तो इसका मतलब रेवेन्यू विल डेफिनेटली बी अ पोटेंशियल फैक्टर, कॉस्ट विल डेफिनेटली बी अ पोटेंशियल फैक्टर. हो गया. यहाँ से कहानी शुरू करो अपनी. कॉस्ट को भी हम ब्रेक कर सकते हैं इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉस्ट. वो भी अपने आप में पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर्स हो जाएंगे. प्रोजेक्ट इजी हो जाएगा. Okay. Got it, sir. Anyone else? Any questions? सर जो आपने अभी एग्जांपल दिया था ऑस्किलेशन एंड डेटा मिक्सचर का, यू ट्राई टू प्लग इन दैट चार्ट. वो चार्ट नहीं है इस डॉक्यूमेंट के अंदर. अब कर देता हूँ. अब कर दूंगा. वो ऐसे भी पढ़ना है रन चार्ट, अलग से भी करेंगे. So we started our thought with saying that potential factors से काम नहीं चलेगा. We'll have to convert, validate which of these potential contributors actually impact our project Y, and for that we will deploy hypothesis testing. Hypothesis is binary, और उसका decision criteria will be dependent on our project Y. And for some time we said that थोड़े टाइम के लिए let's assume that whenever factor contribution is greater than 95%, we will consider HA as true. Now let's continue the story from there. Another very important point to consider when you are using hypothesis test is a concept called confidence interval, confidence level. Confidence level, agar main, if I use the layman language, I'll say, how sure are you about the inference made? Whatever you are saying, अभी हमने थोड़ी देर पहले in our examples we said that shift timing को हमने कहा alternate, which is that shift timing impacts our attrition. My question, next question to you is, how sure are you about the statement that you just made? Unless you've made any alterations, Minitab operates at 95% CL. Matlab, you are 95% sure about the inference you've made if you made that inference from the Minitab. But technically ये है क्या confidence level? You will have to realize that we use sample to make inference about population. Everyone, are you with me? क्या है ये? Yes, sir. We use samples
to make inference about our population. So we now we are saying that we will use samples to make inference about the population. Now, up example socho, we are, I don't know, 140 crore as the population of India. And if you want to decide, as a statistician, if I want to decide whether government of India का कोई decision is acceptable to the Indian population or not, हमने अगर पूरा का पूरा population का सर्वे करने का सोचा, you have to realize that using the population for any research is going to be very costly. It may also take very large number of time. इसीलिए आप सैंपल पॉपुलेशन यूज करने के बजाय सैंपल यूज करते हो. So your company decided to understand what 140 crore people are saying, let us only take 140 lakh as sample size. Are we sure कि जो 140 करोड़ कह रहे थे वही 140 लाख भी कहेंगे? कितना भी आप परफेक्ट सैम्पलिंग कर लो, कितना भी आप बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग कर लो, कि जितना इंडिया में 140 करोड़ में हिंदू का पॉपुलेशन है, मुस्लिम का पॉपुलेशन है, सिख का पॉपुलेशन है, क्रिश्चियन का पॉपुलेशन है, वो आपने अपने सैंपल साइज में भी वैसे ही रखा. आपने जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन सेम रखा, एज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन सेम रखा, फिर भी there is a likelihood that what you got as an inference from your sample may still not be representative of the population. Everyone, are we together on this thought? Yes, sir. Yes. हमेशा मुमकिन नहीं है कि जो हम सैंपल में ढूंढ पा रहे हैं वही पॉपुलेशन में निकलेगा, लेकिन जितना आपको कॉन्फिडेंट होना है उतना ज्यादा सैंपल साइज आपको बढ़ाना पड़ेगा. कॉन्फिडेंस लेवल will always be directly proportional to sample size. Higher the sample size, higher will be your जितना सैंपल साइज बढ़ाऊंगा उतना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. So if what you've received as confidence for 140 lakh, if you want to increase the confidence, then you will have to increase your sample size from 140 lakh to moving upwards. जैसे जैसे आप sample size बढ़ाएंगे आपका confidence level भी बढ़ेगा. Everyone? Sir, question. Yes, Please. sir. Is there any way through which we can identify कि हमें sample size रखना कितना है against the population? कि standard sample size कितना होना चाहिए? आप ये देखें हर टेस्ट का sample size अलग होता है. If I'm doing a 2 sample t test, सैंपल साइज को ब्लैंक छोड़ दें आपको कितना डिफरेंस पे और कितने पावर वैल्यू पे निकालना है ये निकाल देगा. थोड़ा सा ये एडवांस स्टैटिस्टिक्स है, बिल्कुल पॉसिबल है निकालना और निकालना भी चाहिए. बट Why I'm asking it? क्योंकि I have done a COPC certification. So COPC certification में there is a sample size calculator जो वो use करते हैं, which talks about precision and other stuff. तो क्या सिक्स सिग्मा के अंदर भी एक साइंटिफिक मेथड है कोई और स्टैटिस्टिकल मेथड थ्रू व्हिच वी कैन आइडेंटिफाई कि इतना सैंपल साइज इस पॉपुलेशन का होना चाहिए? बिल्कुल है सैंपल साइज का तो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन अवेलेबल है, वो यूज भी होना चाहिए, बट थोड़ा सा वो यूज कर पाने के लिए थोड़ा सा एडवांस स्टैटिस्टिक्स की समझ होनी चाहिए.
नहीं तो बेसिक कैलकुलेटर यूज करके, जो मिनिटैब वाला कैलकुलेटर है वो हाँ। यूज करके आप काम चला लीजिए। ओके। Confidence level is also equal to 1 minus alpha. Alpha is an error. हम स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं कि दो तरह की गलतियां पॉसिबल है, वन विच इज रेफर टू एज अल्फा एरर, another which is referred to as beta error. Whenever we are using sample to draw conclusion about the population, there are two mistakes which are possible. One which is referred to as alpha, another which is referred to as beta. This is best explained using a quote analogy. Let's say I have been presented in the court of law as having committed murder. So there are only two things possible. Either that I am innocent or that I am guilty. Pranay being innocent is the null. Pranay being guilty is the alternate. आप अगर उस कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, जज हैं, तो आपके पास कोई मैजिक वॉन्ड तो है नहीं कि यू कैन गो बैक इन टाइम एंड physically see whether Pranay has committed the murder or has not committed the murder. तो दो गलतियां हो सकती हैं. You may end up punishing the innocent Pranay. ब्रेक में क्या हुआ है जब उस समय से टाइपिंग एरर रहा है. Or you can make another mistake that you can free the guilty. Punishing the innocent is what is referred to as alpha. Freeing the guilty is what is referred to as beta. You guys with me, everyone? Yes, sir. Let's extrapolate the same situation to a practical hypothesis testing exercise. We were of the view that we are doing a project on attrition. So there are two assumptions: salary impacts, salary does not impact. So my null says salary does not impact. Alternate says salary impacts. While salary does not impact, you concluded otherwise. इस मिस्टेक को हम अल्फा एरर कह रहे हैं, या ऑल्टरनेट ट्रू था, आपने नल एक्सेप्ट कर लिया, उसको बीटा एरर कह रहे हैं. क्यों कर लिया आपने ऐसा? सैम्पलिंग एरर. Assume a business situation that एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 10-12 साल से एग्जिस्टेंस में है. But to do your project, you have picked up last 6 months data. And from the 6-month data, the inference that you have done, the sample that you've picked up is biased. उस sample में आपको while salary was impacting, उस sample data में आपको ऐसा दिख रहा है that salary is not impacting. हम उसी मिस्टेक को अल्फा और बीटा के टर्म्स में कहते हैं. Any questions so far, people? When null was true,
and you accepted alternate, इस मिस्टेक को हम अल्फा एरर कहते हैं. When HA was true, you accepted HO, इसको हम बीटा एरर कहते हैं. Confidence level is 1 minus alpha. मतलब अगर आपने कोई टेस्ट किया जिसमें आपने 95% कॉन्फिडेंस के साथ काम किया है, इफ यू चोजन योर कॉन्फिडेंस लेवल एज 95%, इसका मतलब हुआ यू आर लाइकली ऑफ 5% अल्फा एरर. मतलब 5% चांस है कि आप नल को ऑल्टरनेट बोल दोगे. वी टुगेदर पीपल. Yes, sir. Yes. और यही 5% अल्फा जो है, दिस इज व्हाट डिसाइड्स वो जो पी वैल्यू वाला थॉट था. अभी तक हम ये कह रहे थे पी वैल्यू लेस देन 0.05, वो बोलने की बजाय आप हमेशा कहिए पी वैल्यू लेस देन अल्फा वैल्यू, तो हम एच ए कंसिडर करते हैं. पी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा, एच ओ विल बी ट्रू. बिकॉज मिनिटैब बाय डिफॉल्ट 95% पे काम करता है, इसीलिए आप 0.05 को स्टैंडर्ड के रूप में यूज करते हो. इफ कॉन्फिडेंस लेवल is at 95, then the standard for alpha is, अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेंज करोगे, कभी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओगे या घटाओगे, तो अल्फा भी वैसे ही चेंज हो जाएगा. ठीक है एवरीवन? Yes, sir. और ये सारा का सारा हाइपोथेसिस टेस्ट will depend only on one thing, which is your data type. The choice of hypothesis test is dependent on data type of your y and x. सारा का सारा खेल इसी पर डिपेंड करता है. There's nothing else that plays a role. Let's start with situation number 1. y मेरा continuous है, x भी मेरा continuous है. I am doing a project on handling time या cycle time, recruitment का tat, या I want to improve the mileage and so I'm interested in doing a project on mileage improvement. कहीं पर production which is in kilogram is also continuous data versus कोई भी ऐसा फैक्टर जो कंटिन्यूस हो. हैंडलिंग टाइम अगर मेरा प्रोजेक्ट वाई है तो होल्ड टाइम इज कंटिन्यूस डेटा. ACW टाइम इज कंटिन्यूस डेटा. मैं साइकिल टाइम पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ एंड आई सी दैट ब्रेक डाउन टाइम इज कंटिन्यूस डेटा. चेंज ओवर टाइम रिक्रूटमेंट का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैन पावर MPR अप्रूवल में कितना टाइम लगा,
continuous data. Everyone, we are together. Yes, sir. जब दोनों के दोनों x और y दोनों के दोनों कंटिन्यूस डेटा हैं, तो हमारे पास I want you guys to ask me a lot of questions. ये जो अब पोर्शन है, ये हर पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. So please ask me, कितना भी स्टूपिड क्वेश्चन हो, डोंट वरी, प्लीज आस्क. तो हमारे पास दो ऑप्शन है. एक टेस्ट जिसको हम कोरिलेशन टेस्ट कहते हैं, एक टेस्ट जिसको हम रिग्रेशन टेस्ट कहते हैं. और जो डेटा विजुअलाइजेशन टूल है या ग्राफ है जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम उसको ये या तो आपको याद करना पड़ेगा या आपको इसका डॉक्यूमेंट किसी ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा जो हमेशा आपसे एक्सेसिबल हो. In your Six Sigma careers, this is going to be the single most important document that you will have. So ये डॉक्यूमेंट आप खुद से भी बनाएंगे और ये डॉक्यूमेंट आप मेरा वाला भी इस्तेमाल करेंगे. All of you, please open your Minitab. If you see here on this on my desktop, oh God, मैंने वो delete hide कर दिया था. Sorry, 1 second. If you see on my Minitab, I'm currently using C18, which is handling time. मेरे पास C19 में ACW, C20 hold time, probing time. So if I want to find out if there is a relationship between handling time and ACW, if I want to find out whether they are related to each other or not, I have two choices: stats, basic stats, correlation, या stats, regression. I'm going to correlation test. I'm choosing my Y first, handling time, उसके बाद ACW. आप चाहो तो मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हो. This is what you just got. All of you, मेरा स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. दो ही चीज देखनी है. स्टेप 1, पी वैल्यू को देखो. हमको ये पता है if p value is greater than or equal to 0.05, HO is true. क्या है यहाँ? What is my p value? 0. 0, which means हमारे केस में alternate hypothesis is true. All of us can see the screen. कोई भसड़ नहीं है स्क्रीन देखने में? No, sir. It's clear. Step 2, ये वैल्यू जो आ रही है इसको पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं.
इसको भी step 2, look at the Pearson's correlation coefficient value. This value can vary between 0, -1 to +1 to 0. -1 होने का मतलब -1 means negative correlation, +1 means positive correlation. Zero means no relation. बस खत्म, इसके अलावा कोरिलेशन में कुछ नहीं देखते हैं. We are good so far, everyone? यहाँ ये कह रहा है p वैल्यू कह रहा है that there is, इसीलिए हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस पे ज्यादा विश्वास करते हैं. सर फिर जो स्टेप 2 है, जो पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट वैल्यू की बात कर रहा है यहाँ पे, तो वो तो मेरा वही बता रहा है ना कि कितना स्ट्रांगली कोरिलेटेड है एक्स एंड वाई या नहीं. तो फिर हम जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 मेरा पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ द कोरिलेशन स्टडी, क्योंकि पहले स्टेप में हमने बोला कि पी वैल्यू देखो और पी वैल्यू के अकॉर्डिंग यू डिसाइड कि आपको नल के साथ जाना है या अल्टरनेट के साथ जाना है. फिर सेकंड स्टेप है हमारा पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो कि स्ट्रांगली कितना कोरिलेटेड है आपस में वो बता रहा है. Yes. तो आपने जो ये नीचे लिखा कि कोरिलेशन टेस्ट इज नॉट प्रेफर्ड फॉर कॉजल स्टडी, हमको एक चीज और जानना था कि वेदर x impacts y or not, बट कोरिलेशन टेस्ट एक्स वाई के टर्म में बात ही नहीं कर रहा है, ये कोरिलेशन के टर्म में बात कर रहा है. इट इज सेइंग ACW और हैंडलिंग टाइम में पॉजिटिव कोरिलेशन है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा. Whether handling time impacts ACW or ACW impacts handling time, I don't know. What I know is both are correlated. ओके, एंड दे आर पॉजिटिव या नेगेटिव या नो कोरिलेशन, Right. वो बता रहा है स्टेप 2. ओके, नाउ आई एम क्लियर. ठीक है. इसका ऑल्टरनेट आपके पास जो अवेलेबल है वो रिग्रेशन टेस्ट है. स्टैट्स regression. I'm again doing the same thing, handling time versus ACW. Again, you can use multiple. Press OK. बहुत कुछ आएगा. Step 1, look at the p-value. म्हणजे काय, ऑल्टरनेट या नल? alternate. ऑल्टरनेट. तो ये पता चल गया हमको कि ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है. इसका मतलब कि कुछ तो इम्पैक्ट रिलेशन है. हाँ, इम्पैक्ट है. रिलेशन क्या मत है बोलो, वो? इम्पैक्ट बोलो. अब रिलेशन वाला हाँ. टर्म गया, ठीक है तो सर, मैं impact यहाँ है. वो डब्बा डाल देता हूँ. गिव मी 1 सेकंड. HA is true. That is X significantly impacts Y. दूसरा वैल्यू जो हमको देखना है उसको हम कहते हैं R स्क्वायर वैल्यू. दिख रहा है ये आप लोगों को? यस सर. Yes. तो दूसरा जो हम देखेंगे हम उसको कहते हैं R स्क्वायर वैल्यू. R स्क्वायर वैल्यू is referred to as coefficient of determination.
इट एक्सप्लेन्स कि x की वजह से y में कितना इम्पैक्ट हुआ है। r स्क्वायर का स्टैंडर्ड है 62%. If r square is greater than 62, it is the factor is considered as a significant factor, as r square is greater than 62%. Hence, this is a critical factor. In fact, हमारे केस में तो ये 99.9 आ रहा है ना everyone? Yes. Yes, sir. और एक काम करो, कैलकुलेटर निकालो जरा सब लोग, फोन का, लैपटॉप का, किसी का भी। मैं ही निकालता हूँ, छोड़ो। Thank you, sir. All of us can see this sum of square value here, total का value here. So out of the total variability of 1066.2, फैक्टर की वजह से हुआ है 1064.9. एक बार जरा डिवाइड करके देख दोनों को, 1064.9 divided by 1066.2, 99.8780. नाइस। यही आपका आर स्क्वायर वैल्यू निकल के आएगा। Everyone together so far? Yes, sir. अगर दोनों निकल गया, पी वैल्यू भी ऑल्टरनेट आया, आर स्क्वायर भी 62% से ऊपर आया, थर्ड थिंग दैट यू शुड लुक एट इज द मैथमेटिकल इक्वेशन दैट यू आर गेटिंग। ये दिख रहा है, हैंडलिंग टाइम इज इक्वल टू दिस मच ऑफ ACW। ये आपको एक रिग्रेशन इक्वेशन, ट्रांसफर फंक्शन, मैथमेटिकल मॉडल, जो कह लो आप, ये आपको ये प्रोवाइड करता है। इसको यूज करके अगर आपके पास प्रोजेक्ट वाई का डेटा है तो आप एक्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो, एक्स है तो वाई को प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो भी आ गया वापस से। ये निकला था हमारा इक्वेशन वहां जी। Yes, sir. में फॉर्मूला इक्वल टू 0.148 प्लस प्लस ब्रैकेट में 6.23 इंटू, मैं ACW यहां लिख देता हूँ, 0.014. तो अगर मेरा आफ्टर कॉल वर्क 2 मिनट का हो जाएगा तो मेरा हैंडलिंग टाइम 12 मिनट का हो जाएगा। ये कहां से निकाला मैंने? फॉर्मूले से निकला। अगर ये आफ्टर कॉल वर्क लंबा होगा तो कॉल भी लंबा हो जाएगा। Someone saying something? It's 0.0148. 0.014 होगा। जीरो उसमें मिस हो गया फॉर्मूले में। तो पहले क्या देखना है? पी वैल्यू। उसके बाद क्या देखना है? आर स्क्वायर। तीसरा क्या देखना है? मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन तभी देखना है जब पी वैल्यू और आर स्क्वायर दोनों पास हो जाएं, मतलब ऑल्टरनेट और ग्रेटर देन 62। हालत तनावपूर्ण की नियंत्रण में? नियंत्रण में सर ये आर स्क्वायर एडजस्टेड क्या है? जब मल्टीपल फैक्टर्स इस्तेमाल करेंगे, अभी तो हमने एक ही फैक्टर इस्तेमाल किया, then instead of looking at r square we will start looking at r square adjusted, and you already know the scatter plot.
ग्राफ स्कैटर प्लॉट हमेशा विथ रिग्रेशन वाला यूज करो. आई एम सेइंग हैंडलिंग टाइम वर्सेस HCW. प्रेस ओके. खतरनाक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, अपवर्ड मूविंग ब्लू लाइन हो गई. आर स्क्वायर हमारा 99.9 आ रहा था. सर ये ट्रेंड मूव इन वन डायरेक्शन वाला है. नहीं बाबू, तो ये हमने वो देखने के लिए हमको टाइम सीरीज डेटा चाहिए. अच्छा जब रन चार्ट पढ़ेंगे तो वो डिस्कस करेंगे. फॉर रन ठीक है चार्ट, कंट्रोल चार्ट्स, वी नीड टाइम सीरीज डेटा. ये टाइम सीरीज डेटा नहीं है. ठीक है सर. तो CY CX, Y कंटिन्यूअस, X कंटिन्यूअस, दो ऑप्शन, कोरिलेशन रिग्रेशन. कभी कोरिलेशन मत इस्तेमाल करो, हमेशा सीधा रिग्रेशन पे जंप कर जाओ. रिग्रेशन करो और DVT उसके साथ इस्तेमाल करो. In your project template, so if I am doing my Six Sigma project on this, एनालाइज फेज के पोर्शन में if you see this, तो मैं लेफ्ट साइड में ग्राफ लगाऊंगा. मतलब ये स्कैटर प्लॉट जो ये वाला जो था, कॉपी पेस्ट. राइट साइड में जो मिनिटैब में ये वाला पोर्शन आया है, ये पोर्शन चिपकाऊंगा. और P वैल्यू वगैरह हाईलाइट कर दूंगा. I'll go to insert. I will pick up, cancel. I'll pick up shape. P वैल्यू हाईलाइट करूंगा. R स्क्वायर वैल्यू हाईलाइट करूंगा और इसका मैथमेटिकल फंक्शन हाईलाइट करूंगा. और नीचे में लिखूंगा alternate is accepted. As P value is less than 0.05. R square is also very high. This is a significant contributor. पप्पू पास हो गया, इसलिए मैं इसको ग्रीन करता हूँ. बात खत्म. Simple thought, everyone, so far. Yes, sir. Nabila, we're good. Khairatilal, Piyush, Yes. Good, sir. Ankita, सब जी. परफेक्ट है. वीडियो विल गो थ्रू. Riya, Subodh, Yes, sir. Raj. And the document as well. The document will please be updated कर देना sir. आप अपना वो फोल्डर, क्लास नोट्स वाला फोल्डर देखोगे ना, उसमें ये डॉक्यूमेंट पहले से पड़ा है. मैं दोबारा शेयर कर दूंगा. सुबोध, क्लियर है बिल्कुल? Clear. विजय, Yes sir. Good to go.
Divya, you're good. Jyoti, Mayank, Rita, Yes, sir. Namita, Rakesh. Yes, sir. हाँ सर, मिला जुला के ठीक ठाक ही चल रहा है। पढ़ना पड़ेगा राकेश. Now we are jumping to second area. When my y is continuous, but my x has turned discrete. Same project handling time का, लेकिन इस बार मेरे फैक्टर्स शिफ्ट हो गए हैं. टीम लीडर है, मे बी जेंडर है, XYZ, Location. लोकेशन है, प्रोसेस नॉलेज है, etc. When I have my CYDX, तो हमारे पास राकेश, लेकिन पक्का कॉल करियो यार. We can't leave this. मुझे 500 जॉब चाहिए यार. The only way I can get jobs is अगर आप लोग सब्जेक्ट पे स्ट्रांग हो जाएंगे. Whatever I can do, I will help यार. CYDX में पहला क्वेश्चन आपको आंसर करना पड़ेगा कि आप फोकस किस पे करना चाहते हो, सेंटरिंग पे या वेरिएशन पे. सर ये तो ग्राफिकल समरी में ही आंसर मिल जाएगा ना, क्योंकि मीन मीडियन में से मेरे को फोकस कहाँ करना है. मैं अभी इसी हैंडलिंग टाइम का ग्राफिकल समरी बनाता हूँ. हैंडलिंग टाइम, प्रेस ओके. ध्यान से देखो इसको. माई पी वैल्यू इज लेस देन 0.005. एवरीवन, इसका मतलब डेटा नॉन नॉर्मल. इसका मतलब मीन इज नॉट माई प्रेफर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मुझे मीडियन देखना पड़ेगा. तो मैं 3.48 के आसपास तुक्का मार रहा हूँ. आई हैव नो वैल्यू, नो व्यू की एग्जैक्टली कहाँ पे है. तो दिस इज अबाउट 3.48. आई मे नॉट बी completely right, but ये है मेरा करंट प्रोसेस का सेंटर मीडियन. Assume that your customer, your client has given you a target of 2.4. क्या दिख रहा है आपको? What is the inference that you will draw for me here? Sorry. If 2.4 is my client target on handling time, 2.4 USL है या LSL है? टारगेट यूएस. इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए. So every time I'm exceeding my 2.4, it is not acceptable behavior. Correct everyone? Yes. यस सर. म्हणजे राइट साइड में जो भी है ब्लू के सब गड़बड़, लेफ्ट साइड में जो है वो सब पास. यस. And if you see, even your central tendency is not meeting your target. Can I say that? Central tendency is also not meeting my target. यस. Sorry sir, I missed that part. अगर तुम्हारा मीडियन 2.4 से ज्यादा है, 2.4 being my target, your median is also greater than 2.4. इसका मतलब your central tendency, in this case median, is not meeting my target. ऐसे cases में मेरा advice होगा, first project should be reducing the central tendency to meet target. Yes?
मैं जो पहला प्रोजेक्ट करने का एडवाइस दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई पहला काम ये कर ले कि इस रेड लाइन को खींच के इधर लाने की कोशिश करो। यही होना चाहिए पहला प्रोजेक्ट। क्लियर थॉट Yes. एवरीवन? Yes, sir. और अगर ये उल्टा होता, अगर हमारा 3.48 मीडियन है और कस्टमर कह रहा है कि भाई 4.8 से नीचे रखियो, अब क्या करूं? मीडियन इज ऑलरेडी मीटिंग और एक्सीडिंग माय टारगेट। मीडियन टारगेट से ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, अब क्या करोगे सुधार करके मीडियन को? अगर सेंट्रल टेंडेंसी ऑलरेडी टारगेट मीट कर रहा है, ओवर अचीव कर रहा है, तो वेरिएशन का प्रोजेक्ट करेंगे। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? यस, नो, ब्लैक, व्हाइट? यस सर। all black, sir. मत यार। यहाँ हमने देखा इफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ऑलरेडी मीटिंग और एक्सीडिंग टारगेट, तो हम वेरिएशन रिडक्शन का प्रोजेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी टारगेट को, मीडियन तो मेरा ऑलरेडी टारगेट से अच्छा है, तो अब और मीडियन इंप्रूव करके क्या करना है? तो जो भी मेरे राइट हैंड साइड में जा रहा है ब्लू लाइन के, ये सारा नॉट एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, इसको पीछे लाने की कोशिश करेंगे। दैट शुड बी द प्रोजेक्ट। एवरीवन टुगेदर विथ मी ऑन दिस? Yes. Yes. यस सर। सर एक बार दोबारा बता दो। हाँ, बस एक मिनट, 2-4 एक्सरसाइजेज दे देता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेट मी शट डाउन अ फ्यू एप्लीकेशंस। So this is the data for collections. I have I went to stats, graphical summary for collections. कस्टमर का टारगेट मैं बता देता हूँ, मतलब क्लाइंट कह रहा है भैया $10,000 से नीचे का कलेक्शन नहीं चलेगा। कौन सा प्रोजेक्ट करूं, सेंटरिंग का या वेरिएशन का? पीपल? सर वेरिएशन का होगा ना? मीडियन कितना है इसका? मीडियन है 8,000। 8800। हाँ सर। और क्या क्लाइंट कह सेंट्रिंग? रहा है 10,000। सेंटरिंग होगा। लेकिन सर वेरिएशन नहीं होगा क्योंकि अभी हम मीडियन को नहीं हमारा सेट हो रहा। मीडियन को इम्प्रूव करना होगा, और अभी हमारा करंट पी वैल्यू मीडियन लेस है। 10,000 median- जो क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन उससे लेस है ना। हाँ, तो हमको अभी पहला काम करना है कि ये जो हमारा परफॉर्मेंस है, हमको इसको खिसका के 10,000 के ऊपर ले जाना है। इन सच केसेस you should work at improvement of your central tendency. Central tendency. तो सर इसमें जो है हम मीडियन वैल्यू को कंसीडर करके उसको इम्प्रूव करेंगे ना, क्योंकि पी वैल्यू मेरा ऊपर लेस था। एब्सोल्युटली। तो तुम्हारा प्रोजेक्ट का टारगेट रहेगा मीडियन इंप्रूवमेंट। ओके। ऑल वेल सो फार? अब तो कोई बोल भी नहीं रहा है कि क्या है। Yes, sir. नहीं सर, एक अब बार हम- वीडियो आ जाएगा तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर इन दैट। गुड। तो अब हम आ गए हैं उस इलाके में जब हम centering, we are sure that we want to improve centering. Question number 1 for you is, data is normal or data is non-normal? If your data is normal, तो हमको मालूम है हमको मीन पे प्रोजेक्ट करना है, so we will use certain
parametric tests. If your y is non-normal, we will use certain non-parametric tests. Before I jump into this area, एक logic, एक concept around confidence interval is important. Like we were saying earlier, we use sample to make conclusion about our population. तो sample data में से जो information हम draw करते हैं वो sample information होती है. So let's say this collections file that we are using, इस collections file में हमारे पास collections का जो data है is roughly, what roughly? I can tell you exactly. आजा भाई, क्यों बुरा मान गया? Roughly about 304 data points है मेरे पास. तो जब मैं इसका मीन निकालूंगा तो ये तो सैंपल मीन होगा, because we use sample data, the matrix the calculations done are for sample only, but our interest is population. I work for, assume a situation that I work for Maruti and we've just released a new WagonR. ये गाड़ी मेरे जबान को चढ़ गई है. अच्छा चलो WagonR ही सही. We have used rolled out a newer WagonR version in which we are saying that this car will give you a mileage of 24 km per liter. I wanted to be sure, इसलिए I went to the Pune plant. I collected data for 20, 30, 40 cars. 40 cars का जब मैंने मीन निकाला, 40 cars का मैंने माइलेज का डेटा कलेक्ट किया. Collected data for mileage from 30, 40 sample cars. तो मैंने जो मीन निकाला, मीन कैलकुलेटेड इज सैंपल मीन, करेक्ट. लेकिन चाहिए मुझे क्या? आई नीड पॉपुलेशन मीन. तो सैंपल मीन को यूज करके हम पॉपुलेशन मीन निकाल सकते हैं. सैंपल मीन, यूजिंग द सैंपल मीन, one can create a range where the population सैंपल मीन को देख के हम पॉपुलेशन मीन कहाँ लाई करेगा, वो एक रेंज वैल्यू होगी. एक वैल्यू नहीं होगा, एक रेंज होगा. उस रेंज को हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं. लुक एट दिस ग्राफ हियर. यू हैव अ मीन ऑफ 9170, बट नीचे देखो, उसने एक वैल्यू देने के बजाय व्हाट हैज इट गिवन अस? 88 to 1.5, 95, 19.4. This range where the population mean is expected to lie, that range is referred to as confidence interval. Got it? Yes, no? Yes, sir. यहाँ देखो, मीडियन निकल के आया किसका? सैंपल का. सैंपल मीडियन इज 8838, बट हमारा इंटरेस्ट होता कि कलेक्शंस. तो कलेक्शंस के बारे में बताओ यार, कलेक्शंस का क्या होने वाला है? तो इसने कहा पॉपुलेशन मीडियन
is expected to be between 84.18 to 91.47. This range is referred to as confidence interval. ये जो निकला वो स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है, सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ है. What is standard? What is confidence interval? Confidence interval is the range where the population statistics is likely to lie. Simple thought, everyone. ये लॉजिक बहुत बार आके खून पिएगा, इसलिए नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज पूछ लो. कॉन्फिडेंस इंटरवल हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जान है. Sir, I don't know whether it's a stupid question. क्या मैं इस कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैन आई यूज दिस डेटा टू सेट माय एसएलए टारगेट? अगर मेरा नया प्रोसेस है जहां बिल्कुल अभी वही डिस्कस करेंगे. दैट इज द नेक्स्ट डिस्कशन विल गेट इनटू. ओके. तो हम ये कह रहे थे कि डिपेंडिंग ऑन वेदर माय डेटा सेंट्रल टेंडेंसी is greater than the target, equal to the target, वो वाला लॉजिक पर हमने डिसाइड कर लिया कि हम सेंटरिंग में काम करेंगे. अगर मेरा डेटा नॉर्मल था तो हम मीन बेस्ड टेस्ट यूज करेंगे, नॉन नॉर्मल था तो मीडियन बेस्ड टेस्ट यूज करेंगे. When I'm in my CYDX centering and now I know that मेरा Y is normal, तो मेरे पास 3 हाइपोथेसिस टेस्ट हैं. This is Y continuous X discrete. Centering है मेरा प्रॉब्लम. I found out that मेरा Y is normal. हमारे पास 3 ऑप्शन है. One referred to as one sample t-test. Another referred to as two sample t-test. Another referred to as one-way ANOVA test. When we want to compare तो हमारे पास 3 alternatives हैं. One which is referred to as one sample t, another which is referred to as two sample t, another which is referred to as one-way ANOVA. ब्रेक चाहिए या कंटिन्यू करूं? ब्रेक दे दीजिए सर. सर 10 मिनट का ब्रीदर मिल जाता तो ठीक है. हाँ, क्योंकि ये पोर्शन गड़बड़ा जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा. सारा आज का किया जरा फेल हो जाएगा. Let's take a 10 minutes breather from here, guys. We meet at 5:10. Okay, sir. और प्लीज ये इलाके में डाउट लेके घर मत जाना, फंस जाऊंगा मैं. जितना स्टूपिड क्वेश्चन हो दिमाग में पूछ लो. तो प्लीज सर एक तो इसका एक डाउट सेशन आप रखवा देना नेक्स्ट वीक ही, क्योंकि आएंगे हमारे डाउट्स. होपफुली देखो ना, अभी प्रैक्टिस करेंगे ना 10 मिनट तो शायद डाउट खत्म हो जाएंगे. अभी ये साइलो में पढ़ रहे हैं ना हम. व्हेन वी कनेक्टेड टू द प्रोजेक्ट फिर तो लगेगा केक वॉक है. डोंट वरी. 10 मिनट का ब्रेक एवरीवन. स्टार्ट करें. Yes, sir. Before we took the break, we started our discussion saying 3 possible options: 1T, 2T, one-way ANOVA. This is where we were.
स्क्रीन बिल्कुल विजिबल है ना क्लियरली? Yes, sir. जी सर. First test that we have is referred to as the one sample T. Used a one usage is that if you wish to compare mean of a group to a standard, like the Wagoner example I was giving you. If so, I want to compare the mileage of sample cars versus 24 kilometer per liter. एक मिनट चेक करने दे यार, रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ हो रहा है, ठीक. You guys Sir, with me, everyone? Standard is SLA, target. कुछ भी, target, goal statement. I can compare the handling time to handling time mean of a particular month versus the goal statement of a project. If you are not doing a Six Sigma project, I can compare collections ka mean versus the organizational target. If you see the data that I have, in this column, I also have the data for TOS, time on system. How many hours were people present on in the office? I go to stats, I go to basic stats, I go to one sample t-test. I choose the data, TOS. If I click this, perform hypothesis test, वो hypothesis test करेगा. If I only press OK right now, ये क्या किया? It has given you the confidence interval. सर ये स्टेप्स एक बार फिर से बता दीजिएगा, स्क्रीन रुक गई थी बिल्कुल. Sure. जब मैंने टारगेट नहीं डाला, तो what has it published? It has published a very important statistics for me कि मेरे टॉस का कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ मीन क्या है. व्हाट वाज कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ मीन का मतलब? मेरा पॉपुलेशन, look at this organization here. An organization has 22 working days, and each day you got to give me minimum 8 hours of work. So इस कंपनी का टारगेट 22 into 8 is 176. Look at what your team has done. What is the performance ka mean? 148 to 157 hours. God, 176 तो mean मेरा achieve नहीं कर रहा है. Correct everyone? यस सर. राइट सर, उससे कम ही कर रहा है जितना करना चाहिए था 148. तो एक बार टारगेट डाल के देख लेते हैं. I will say perform hypothesis test. I will say 176. Press OK. Obviously, it will be alternate hypothesis. ऑल्टरनेट आएगा. Because 176 तो इसके बीच में आ ही नहीं रहा. Correct ना everyone? Yes. It is giving you a p-value basis which you will decide whether null is true or alternate is true. It is telling us that null alternate is true. That's true. HA is true. In the case of one sample t-test, null will say mean equals the standard. Alternate will say mean not equal to. .
और वो टेक्निकली कर क्या रहा है, वो कॉन्फिडेंस इंटरवल को टारगेट से कंपेयर करता है। अगर इस कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में ये 176 फिट होगा तो वो बोलेगा नल, एल्स वो बोलेगा ऑल्टरनेट। इफ टारगेट फॉल्स बिटवीन कॉन्फिडेंस इंटरवल तो HO होगा, एल्स HA विल बी ट्रू। सर फिर इस कंडीशन में मान लीजिए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की रेंज देखने की बजाय सीधा पी वैल्यू देखें तो वही चीज नहीं आएगी। लेकिन इसमें दोनों बात आएगी ना। अगर तुम ये देखो फिर से स्टेटमेंट, व्हाट इज नल सेइंग? नल इज सेइंग मीन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड। ऑल्टरनेट क्या बोल रहा है? मीन इज नॉट इक्वल। नॉट इक्वल से तुम्हारा क्या क्या अंडरस्टैंडिंग हुआ? I still have two options. Either it is greater than or it is less than standard. Right. So your HR VP is asking you कि भाई क्या हुआ, प्रॉब्लम है कि नहीं है? अगर ये ग्रेटर देन स्टैंडर्ड रहता तो खुशी का बात होता। नो, हाँ क्योंकि we are doing greater than 176 hours. Right. So you should look at the standard. Yeah, you can change. If I go to stats, basic stats, one sample t-test again, you see the options here. Option में तुम null alternate change कर सकते हो। अभी नहीं दिखाऊंगा, but कर सकते हो। अभी क्या था? Alternate था not equal. Right. We can change it to less than, we can change it to greater than. नॉट इक्वल किया इसलिए उसने रेंज दिया ना। Not equal वो by default रहेगा। ओके Everyone, we are together so far. Yes. एक use one sample t-test का to compare against a standard. दूसरा जो अभी हुआ था confidence interval, it publish the confidence interval of mean, which can have several purposes. Purpose number one, in a lean Six Sigma project, the goal has to be mandatorily outside our CI. Stats, basic stats, one sample T, मुझे collections का project करना है, मैं कोई target नहीं डाल रहा। This is my defined phase of Six Sigma. I pressed OK. मुझे क्या मिल गया? Confidence interval 8822 to 9519. Mandatory है that the goal statement of a Six Sigma project has to be outside the confidence interval. इसका मतलब any goal greater than 9519 is acceptable. Fair thought, everyone? Could you please repeat this, Pranay? मैंने क्या किया? कलेक्शंस के डेटा का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला। हम डिफाइंड फेज में हैं अभी। हमको अपना गोल स्टेटमेंट बनाना है। तो सिक्स सिग्मा में ये मैंडेटरी है कि सिक्स सिग्मा का गोल स्टेटमेंट हैज टू बी ग्रेटर देन द कॉन्फिडेंस लेवल। आई एम नॉट सेइंग ग्रेटर देन, इट कुड बी लेस देन आल्सो, डिपेंडिंग ऑन द मेट्रिक। इट हैज टू बी आउटसाइड द कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब क्या? कि तुम्हारा पॉपुलेशन मीन तो ऑलरेडी 9519 अचीव कर रहा है। तो तुम इसके अंदर का डेटा का तुमने टारगेट ले लिया प्रोजेक्ट का 9000, कलेक्शंस को मैं इंप्रूव करके 9000 कर दूंगी। वो तो ऑलरेडी हो रहा है, करेक्ट ना? Yeah. तो सिक्स सिग्मा में ये मैंडेटरी है दैट द गोल हैज टू बी मैंडेटोरली आउटसाइड द कॉन्फिडेंस इंटरवल। पहला इस्तेमाल। it is extensively used for baselining and benchmarking purposes. मतलब बड़े बड़े टर्म्स हैं।
अज्यूम करो कि यही बिजनेस, ये एक बिजनेस क्लाइंट के पास चल रहा है, ये कलेक्शंस का प्रोसेस, कलेक्शंस का डेटा तुमको क्लाइंट से मिला है। अब ये बिजनेस तुम्हारी फैक्ट्री में, तुम्हारी कंपनी में माइग्रेट होने वाला है। यू वांट टू एस्टैब्लिश द टारगेट। तो मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंटरवल चेक करूंगा कि देख यार, तू अपने कंपनी में, अज्यूम करो क्लाइंट है हमारा एसबीआई और हम एक कॉल सेंटर है, तो मैं अपने क्लाइंट को बोलूंगा दैट यू आर करंटली डूइंग 8,822 टू 9,519, ये है तुम्हारा मीन। तो तुम्हारा जो प्रोसेस हमारे पास आ रहा है, हम भी अपना मीन का टारगेट यही रखेंगे, 8,822। क्लाइंट चाहेगा कि वो हायर वाला बैंड तुमको दे, तुम पुश करना कि लोअर वाला बैंड ले लो। फाइनली बीच बीच में न तेरी न मेरी, बीच में कुछ एग्री कर जाओ। एवरीवन, वी आर ओके? तो वन सैंपल टी टेस्ट का दोस्त, वी स्टार्टेड बाय सेइंग वन सैंपल टी में पहला यूसेज ये है that you can use it to compare mean to a standard. The other is that you can publish the confidence interval, which will have several purposes. Clear thought everyone? मैं यही collections, इसी डेटा को फर्दर स्ट्रैटिफाई करके बाय पर्सन निकाल सकता हूँ, बाय शिफ्ट निकाल सकता हूँ और फिर बेसलाइन बना दूंगा। क्लियर है एवरीवन? आगे बढ़ो। सर एक Yes. क्वेश्चन था इसमें, प्लीज। एक बार आप ऊपर जाइए, उसमें द काइंड ऑफ टेस्ट जिसमें आपने लिखा है वन सैंपल डेटा, वो हाँ यहाँ अब यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि लाइक वन सैंपल टी टेस्ट मेरा एप्लीकेबल तो तभी होगा ना जब मेरा y is continuous and x is discrete. करेक्ट। व्हाट इफ अगर मेरा डेटा टाइप ही चेंज हो गया, तो ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला जो मैं अपने टारगेट बेसलाइनिंग के लिए यूज करना चाहता हूँ, उसको तो मैं ये टेस्ट ही नहीं रन कर पाऊंगा उस डेटा टाइप में। एब्सोल्युटली। और तो बहुत सारे टेस्ट हैं। अच्छा, उसमें भी मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा? हाँ, सेम कॉन्फिडेंस इंटरवल का कॉन्सेप्ट। ओके, क्वालिटी का बेसलाइन करने के लिए कोई दूसरा टेस्ट करेंगे, लॉजिक ठीक, सेम रहेगा, बस टेस्ट का नाम बदल जाएगा। ओके, ठीक है सर। दूसरा टेस्ट है हमारे पास, वी कॉल इट द टू सैंपल टी टेस्ट। लाइक द नेम itself is saying, two sample. So when you wish to compare mean of two groups to each other, you will use the two sample t test. मुझे दो टीम का compare mean of collections for 2 months. 2 months की जगह पे जेंडर हो सकता है, या 2 shifts, या 2 team leaders. People, we are good so far? Yes, sir. यस सर। Yes. I can compare before after. ध्यान रहे, ये सिर्फ मीन कंपेयर करता है। तो ये जो बिफोर आफ्टर है, वो क्या बिफोर आफ्टर होगा? बिफोर आफ्टर मीन होगा। अभी बहुत कंपनीज में कैसा था, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, नाउ पीपल आर बैक, यू वांट टू सी बिफोर आफ्टर एनालिसिस ऑफ योर मीन टू सैंपल टी टेस्ट। ये टेक्निकली करता क्या है? इट कैलकुलेट्स confidence interval of both groups if they overlap. So null, else alternate. मतलब मैं पहले सिर्फ आपको फोटो दिखाना चाहता हूँ ओवरलैप वाला, इसलिए मैं अनोवा का फोटो बना रहा हूँ।
Ideally, this should not have been done. Can you see this photograph that you have in front of you? ये parenthesis is the confidence interval. If I'm comparing both, if they overlap even slightly, तो इसका मतलब null hypothesis होगा. If they don't overlap, अगर ये ऐसा होता तो ये alternate hypothesis होता. Yes, people? Simple thought? नहीं सर, नहीं समझ में आया. If you refer to the discussion that ये क्या कर रहा है? Two sample treat कैसे काम करेगा? It will calculate the confidence interval of both. ठीक? अब देखो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल लिया एक का, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल लिया दूसरे का. अगर ये ओवरलैप करेंगे तो नल होगा, अगर ये ओवरलैप नहीं करेंगे तो अल्टरनेट होगा. सिंपल. ओके, मतलब जो सीआई की जो रेंज है दोनों डेटा सेट में, अगर वो कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं, किसी न किसी पॉइंट में एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो नल होगा, नहीं तो अब ये देखो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट सब एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं. करेक्ट. नल हाइपोथेसिस. ठीक. हम करके देख लेते हैं. स्टैट्स, बेसिक स्टैट्स, टू सैंपल टी, कलेक्शंस वर्सेस जेंडर. ओके, ई वैल्यू आएगा क्योंकि हमने देखा तभी जबरदस्ती फोटो बना के जेंडर वाला फोटो जो था वो फोटो ऐसा था फोटो ये. इसलिए सिंपल एवरीवन. तीसरा टेस्ट है. यहां 2 ग्रुप हैं. अगर मल्टीपल ग्रुप हो, कंपेयर मीन ऑफ ग्रेटर देन 2 ग्रुप्स टू ईच अदर, तो वन वे एनोवा करते हैं. टेक्निकली सेम काम करेगा. इट कैलकुलेट्स CI of all groups if all overlap, so null. बताइए साहब, नल या ऑल्टरनेट? नल. नल. This would be null. पी वैल्यू भी नल ही बता रहा है. Null. मैं कभी भी पी वैल्यू नहीं देखता. मुझे तो बस ये वाला फोटोग्राफ मेरे लिए काफी है. लेट्स कंपेयर अनदर वन. ओ है नहीं. ऑल्टरनेट. कौन सा है जो ओवरलैप नहीं कर रहा? डिले इन क्लेम्स एंड अर्ली क्लेम सेटलमेंट, ये ओवरलैप नहीं कर रहे. प्लीज एडवाइस. ऑल्टरनेट 0 to 1 years वाला. उन बेचारों का कलेक्शंस भी बहुत लो है, इन दोनों का कलेक्शंस बहुत हाई है. Everyone, are you with me? Yes. Yes sir. Yes sir. वन टी क्या कर रहा था?
comparing mean to a standard. 2T क्या कर रहा है? Comparing mean of two groups. 1 ANOVA क्या कर रहा है? Comparing greater than two groups. काम खत्म. टेस्ट का नाम one sample T compare mean to standard. 2 sample T compare mean of two groups. 1 ANOVA compare mean of greater than two groups. मीडियन साइड में सेम टेस्ट है. एक टेस्ट जिसको हम कहते हैं वन सैंपल साइन, इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ 1T. एक टेस्ट है मैन विटनी, रिप्लेसमेंट ऑफ 2T. एक टेस्ट है वन वे नोवा का रिप्लेसमेंट मूड्स मीडियन. तो व्हाट इज वन सैंपल साइन? क्या करेगा वन सैंपल साइन? कंपेयर मीडियन टू अ स्टैंडर्ड. मैन विटनी क्या करेगा? कंपेयर मीडियन ऑफ टू ग्रुप्स. मूड मीडियन क्या करेगा? कंपेयर मीडियन ऑफ greater than two, more than two groups. Simple thought, everyone, so far? Stats non-parametric. One sample sign यहाँ है, man Whitney यहाँ है, mood median यहाँ है. I'm doing one sample sign, collections, कोई target नहीं दिया. Okay. So instead of only giving you 95% का information, वो आपको 95, 94.16, 95.53 तीन confidence interval का upper lower दे देता है. टारगेट के साथ कंपेयर करना है, टेस्ट मीडियन डाल दो. लेट्स से माय टारगेट इज 1000 10,000. ऑब्वियसली मेरा 95% कितने पे आ रहा? 8419 टू 9147 और टारगेट है मेरा 10,000 का. पक्का फेल होएगा. ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू हो गया. पीपल क्वेश्चंस? सर एक चीज समझ नहीं आया इसमें. कॉन्फिडेंस इंटरवल मेरा इनबिल्ट है मिनिटैब में 95%. उस मीन वाले में तो 95% का ही उसने कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया था. यहाँ पर ये 94.16 फिर 95.53 और इससे पहले आपने जो टेस्ट करा उसमें वैल्यू कुछ और थी, मतलब 94 समथिंग कुछ और वैल्यू थी. तो ये कैलकुलेट कैसे कर रहा है अचीव्ड कॉन्फिडेंस वाले में? इज देयर ये तीन वैल्यूज, तीन कॉन्फिडेंस लेवल्स पे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल के दे रहा हूँ बस. तो सर ये जो है ये 94.16 क्या ये कांस्टेंट वैल्यू है जैसे हमारा 95%? अच्छा, ये कांस्टेंट है. ठीक. जिस तरह से 2T टेस्ट किया था वैसे मैन विटनी टेस्ट होता है. डेटा कॉन्स्टैट फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा. I'm doing collections by team leader. Press OK. अब मेरे पास टीम लीडर अलग अलग डब्बे में आ गए. I go to stats, non-parametric, man Whitney, Anish compared to Vicky. P value 0.05 से बड़ा है, मतलब median of both the team leaders is equal.
questions, people? Simple है, everyone? यस सर, ये एक बार वीडियो से करेंगे ना दोबारा प्रैक्टिस तो और क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ डाउट होगा तो पिंग कर लेंगे। Pranay, I have a question here. Please. Do we have any kind of ready-made checklist for all the tests that we have available for different scenarios? Like the first one was continuous y, continuous variables, and then we had the continuous and the discrete. I have the flow chart. The flow chart is there, but I'm trying to say that is there any checklist where we can check for each and every test, not only for the discrete and continuous, but for the R square to be checked or not, the CI, which value it needs to we need to look at in that particular test, like complete, मतलब पूरा, ऐसा कुछ है हमारे पास? नहीं है. Okay. So, and I'm sure it can be prepared, right? So, okay. If you allow, can I try to prepare it for the class? Absolutely. I think it would help everyone as a checklist. What you are saying is very true. It's not tough, but yes, you would get a little bit confused where exactly what points to be looked at in a particular test and what should not be missed basically. Correct. Okay. It will be really helpful, Nabila. Thank you so much. क्योंकि है ना, if we get confused, then we end up wasting our 3-4 days in the analyze phase, and then ultimately we realize कि हमने टेस्ट ही सारे गलत कर दिए. नहीं यार, अगर तेरा फ्लो चार्ट बना हुआ है, हाँ हाँ कुछ नहीं होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा, कोई गड़बड़ नहीं. So you will have a document, train class notes, Analyse 4.2 कुठे गेलोय? अच्छा है हे. आपको डिस्क्रीट कंटिन्यूअस समझ में आता है तो 80% ऑफ योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. और अगर डिस्क्रीट कंटिन्यूअस नहीं समझ में आता है तो आप 6 सिग्मा में करके आ रहे हो. ठीक है तुम्हें. तो ये आपके पास अवेलेबल है कि आपका प्रोजेक्ट वाई कंटिन्यूअस है. अच्छा, वाई कंटिन्यूअस है, एक्स डिस्क्रीट है. ये आपके पास अवेलेबल है. दिस डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल विथ यू. ये टेस्ट कब करते हैं, क्यों करते हैं, इसमें क्या देखते हैं, वो अवेलेबल है. That's already available in the document provided. Yeah, that's there. अवेलेबल है आपके पास, इसको यूज कीजिए. उसमें मैं एक चेकलिस्ट बना दूंगी फिर भी. प्लीज, बहुत अच्छा होगा. Make it easy. I know it's going to help everyone. और वो मिनी टैब के स्टेप्स लिखे हैं सर उसमें इन द मॉड्यूल दैट वी हैव कि अगर कोई वो स्टेप्स हैं. ठीक है, देखो देखो ये दिख रहा है तुझे? ओह, स्क्रीन शेयर नहीं है. और डन. तो द डॉक्यूमेंट दैट you'll get, वो इस डॉक्यूमेंट में ऐसे स्क्रीनशॉट्स बने हुए. हाँ, देन इट विल बी हेल्पफुल. उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये आएगा, जो आएगा उसको फिर ये करना है. वो सारा बना हुआ है इसमें. ठीक है सर. कंटिन्यू करें या क्लोज करें? क्लोज नहीं सर, अब क्लोज करते हैं सर. आज के लिए बहुत हो गया इतना. घबराहट मच गई एकदम. Everyone who is a green belt in the session, आपका एनालाइज फिनिश हो गया. प्रैक्टिस कीजिए, सवाल है तो पूछिए. ब्लैक बेल्ट्स वी विल कंटिन्यू फॉरवर्ड. श्योर सर. तो सैटरडे वी विल हैव एनालाइज का अभी और भी होगा ना क्लासेस? 4 घंटे सैटरडे, 4 घंटे संडे. ओके सर, ठीक है. ओके सर. क्योंकि जो टेस्ट बचे हुए हैं वो बहुत सारे हैं और वहां से इसको पिकअप करेंगे. ठीक है एवरीवन. सो we'll catch up on Wednesday. Okay sir. Sure. And if you guys are available beyond that, I am game. We can take further sessions. Green belts, your analyze phase is done. Come over for practice or schedule your practice and projects. Let me know
I will assign trainers जो आपके साथ बैठ के आपको हेल्प करते हैं. संजीव, you'll have to take a lead here. Okay, sir. Sir, can we also join on Wednesday? बिंदास, must. अगर फ्री हो तो पक्का आ जाओ. Yes, I'm free. So I'm just asking because I have a green belt, ना, तो इसलिए पूछ रही थी. I'll come. ग्रीन बेल्ट आप ये समझ लो कि 4 घंटे की क्लास और बची. इम्प्रूव कंट्रोल 2 घंटे, टूल्स 2 घंटे, 4 घंटे में खत्म. प्लीज लेकिन जितने ज्यादा प्रोजेक्ट करोगे उतना हाथ क्लियर होगा. सो आई वुड रेकमेंड कि कम से कम 2, 3, 4 प्रोजेक्ट ट्राई करो. ठीक है गाइस, आई विल कैच अप विद यू ऑन वेडनेसडे एंड संडे. वेडनेसडे, सैटरडे एंड संडे. होपफुली Sure, sir. ग्रीन बेल्ट्स फिनिश हो जाएंगे एंड देन वी कैन टेक इट अप फ्रॉम हियर. All the best. Okay, sir. Okay, sir. Bye. Thank you. Bye. Thank you, sir. Bye, Have a sir. good day. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.